My question is, we as a QEC, how do we assure quality of teaching? It is very specific. How do you assure? Let's speak out. So you set up KPIs at the start, and then if the professor or say a faculty member meets them, then his notion is we set KPIs. If you meet, you assure quality. If you don't, you fail. The point is then what is your role? KPI तो HEC आपको बना के दे देती, and you just need to meet that. After development of KPIs, there is some CQI mechanism there. अगर CQI mechanism होगा, तो by getting the feedbacks, तो आप उसको continuous development में आएंगे, and then it's continuous movement and continuous movement. Let me make it more practical. ठीक है? ये सब हम नहीं कर रहे ना. तब कुछ हम कर क्या हैं? I won't like to speak of what book says. What QC can do. That's my point. Or is doing. Any idea? Any opinion? Not sure. Evaluation of Okay, I have one difference of opinion. Tell me one thing. How do you know that you are perfect and the faculty is not perfect? मतलब you are taking the feedback. वो आपने सब पूछा था कि पिछले पूछा थी मैंने, नहीं आपने पूछा था. What is the role of the faculty? Does he have any say into QA mechanism? तो आप कैसे महसूस करते हैं कि आप perfect हैं and you are fit to run QA? अच्छा मैं देखिए I am just trying to generate some discussion. If your role is limited to making SAR, conducting feedback forms, and preparing YPR. In addition to this, inviting one speaker to your university and going to other universities to attend. Inviting some speakers or going somewhere. And finally, IP. This is the routine, right? So, what is the value addition? So, what is the value addition? This is a very monotonous event to me, no? ठीक है, सबको समझ आ गई क्वालिटी एश्योरेंस डिफरेंट पैरामीटर्स. अब असल जो है ना वो ये करना है कि जो एक्शन प्लान भी लोगों ने बनाए, जो लोगों ने एक्शन प्लान बना रखे हैं एसआर के बाद और वो सारा एक्टिविटीज आगे अगले उस पे स्टेप पे देखें तो सही है कि मैं अगले साल या उस साल इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं. नंबर 1 नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस प्लान वर्सेस फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी जो हमारे यहाँ. अच्छा, इस सब में पीछे के अपने रोल से वो एटलीस्ट हर वक्त जिसको कहते हैं ना ठुगे मारते रहे तो शायद कि कभी किसी को मेरी बात पहुंच जाए वही करनी. फिर जब वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो जाए उसमें वो खुद ही बेंचमार्किंग सेट करें अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर. यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर वालों को नहीं कह रही. जब हम QC के लेवल पे मैं QC डायरेक्टर हूँ, मैं इस पे मुझे मदद नहीं देती क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग की बात हो. एनवायरनमेंट प्रोविजंस वो बात है कि पहले जिन्होंने करना है टीचर और लर्नर उसको तो ऑन बोर्ड दे दो. ये बताइए इतनी सारी मुश्किल बातें मैंने बताई, क्या हमें से कोई कर रहा है? एक्शन प्लान जैसे में क्या एक्शन प्लान का एड्रेस है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक्शन प्लान क्या ठीक बना है पहले तो ये बताया ना. इज द एक्शन प्लान एक्चुअली एक्शन प्लान? द एक्शन प्लान यस प्लीज. The role all these are variables that they to achieve quality, but shouldn't we be discussing exactly what do we mean by quality? Because once we define quality, that is our goal. Okay. Then we can reach. देखिए अगर आपको याद हो there was a session in the previous workshop scope of QA.
QEC scope. And Dr. Hina discussed a desktop scope provided in PC1. Many of us have gone through that, but we never implemented that. Never. For example, quality benchmarking, there is a word, right? There is a word, qualification framework. As a QA professional, you need to understand first thing first. What is your domain of work? Okay? If you look at the topic even, quality assurance of teaching and learning, so ये SAR तो एक mechanism है, assures कि ये काम हो जाएगा. काम हो नहीं हो रहा, how do you make sure कि ये ठीक हो रहा है? For that, you need to be proficient in QA practices locally and internationally. So without that, you will not be able to grasp what faculty is trying to put up or trying to produce, nor you will be able to comment on that. Not comment will just. I mean, whatever action plan that you suggest, you will not be able to comment even. So what is plan actually? इंटरपर्सनल इश्यूज को क्या करेंगे जब फिर डीन कहेगा जब आएंगे किसी वाले को मैं देख लूँ आप जाए Should I answer the question? और इसको सेकंड करेंगे मैं सर हमसे की बात का जवाब आई जो देखिए एक बड़ी मोटी सी बात आपको बताऊं when you reach to the level they are expecting they will not telling you this but if you keep telling them what to do they will not do it. Trust me, I keep repeating one thing. When I started working for Dow, doctors are more arrogant than any other faculty. Doctors and dentists. ये दो बड़े arrogant हैं. Dentists सबसे ज़्यादा होते हैं. But doctors are second. Most arrogant people. And dean in that faculty means that he is the king. Telling them something to do is something next to impossible because they have their stereotype practices. When I started working for 2 years, they did not listen to me. Not at all. आप जान नहीं सुन रहा, but gradually what happened? When we had dialogues at different forums, they started realizing that the other person also knows. And then when we facilitated them at some point of time, those who read the comments on my LinkedIn post, they will see there is a professor. He was ex-director of postgraduate institute. And he was so kind when we started working together that he started collaborating. So once you prove your work, this does not happen. But if you keep telling them what to do, there would be a problem. इसीलिए मैं आपसे एक बात काम करते हैं ना, इसको हम फ्रेमवर्क को देखते हैं. इस फ्रेमवर्क के मुताबिक whether we are going along or not, you have to do it. This is my notion. It's not faculty. You have to make sure if it works. Where should I put it out? आप इस तरफ या इस तरफ से हो जाएगा. Okay. देखिए, I have selected few domains. I have not taken all. I'll try to finish them within the given time, but the list is exhaustive. Now, I am talking to QA professionals working in universities and they are trying to be a part of academia. How can they prove their work? How can they project to the faculty what is best for the institution? Beginning from the first one, let's talk about curriculum first. As a QA professor, you need to understand first what curriculum is. It's not what HEC has provided, it's not what your university has provided. You need to understand the definition of curriculum. This is number one. Number two, you need to be familiar with all the policies related to curriculum given by HEC. So that when you are speaking of on behalf of something, not random speaking. Talking about curriculum, the first thing first, program planning. How is the program conceived? आप ये क्वेश्चन करके देखिए, how to penetrate within a faculty, starting from the question, how is the program conceived? If it's an old program,
you will not find any trace how it was conceived. And if it is a new program, they might have something on the paper that we took all the stakeholders on one platform. नए करिकुलम में they would say कि हमने BOS में एक्सपेरिमेंट को शामिल किया हुआ था, they reviewed it. But the point is, क्या आपको होता है कि प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेजेस क्या होंगे? अच्छा, अगर नहीं पता है तो क्या आपने करिकुलम डिवीजन HEC के SOPs देखे हैं? If you look at the SOPs, you will realize that all the curriculum was designed by a committee, specific committee for this specific curriculum. So program planning के what are the stages? If you are telling the faculty that your curriculum needs to be revised, you need to provide them some stages. Then curriculum structure. वो document लीजिए आप. Usually what I request the faculty कि मुझे आप अपना program document दे दें. वो program title और courses की division दे देते हैं. ठीक है? Now, my next question usually is आपने academic council से क्या approve करा है? आप यकीन कीजिए, sometimes faculty get the approval of title only, and they say the curriculum approved है. Some time back, one of our programs sent us कि हम academic council में agenda भेज दें. I said fine. उसमें लिखा हुआ था BOS के अंदर approve हुआ है curriculum. अब नाम तो प्रोग्राम सामने आ जाएगा, X program. I said, where is the program? I said, this is the program. नहीं मतलब, where is the program? Trust me, they did not have the program. They just got the approval from BOS that the program approved. We are planning to start this program. We want your approval, and they said approved. ये मशहूर जुमला है approved. Another example, I was sitting in academic council as co-opted member. उन्होंने कहा भाई हम शुरू करना चाह रहे हैं BS in X. I said fine, but where is the program? जैसे अभी तो हम अप्रूवल दे रहे हैं, प्रोग्राम हम बनाएंगे. Trust me, this was the case. The reason why Director QEC has been asked to be a member of this academic council because he needs to make sure that things do not come directly without any rules. So when I say program planning and curriculum structure, अच्छा, अब point is if you say that there should be some structure, they would ask you. आप बताइए क्या होगा structure? इसी तरह का बना हुआ है. The solution that we got, what we did, we prepared a template. ठीक है? We shared the template on the QA circle as well. अगर आपको याद हो. Program specification. We requested that please fill all the programs existing in the new on program template. In the program template, we incorporated all the requirements of SAR, all the requirement of PQR, and the requirement of say any accreditation body if there is any. तो हमारे पास क्या था? मैपिंग भी थी उसके अंदर PLOs भी थे, उसके अंदर CLOs भी, everything was embedded. अच्छा, फिर post graduate came, they said we also want. Look at the level of trust on QEC. The Vice Chancellor said, get the template from QEC of the program and fill it on that. Even if कोई diploma भी होता है, तो they come to us. We did not reject their curriculum. We requested only that curriculum should not be approved unless it is endorsed by QEC. Immediately there was a question by some senior member. कि एक PG कमेटी है, वो और आप मिलकर काम कर रहे हैं. I said we are not relevant to contents, we are relevant to compliance. So contents can be assured by the PG committee since it's the PG program. Our role is to make sure that program is within the framework. When I say within the framework, I simply mean to say the program must have program learning outcome. Right? Program must have mapping of courses with the program. If there is no mapping, no program. अच्छा, then there was a question. सर बैठे हुए हैं. Outcome-based education was introduced in engineering university. It was made mandatory, right? People develop software. There are some online participants as well who have introduced it very successfully.
But what happened? In some cases, which I witnessed myself as a first-hand experience, as a QA professional, the Pakistan studies teacher said, I made 2 course learning outcomes. And I linked it with PLO, and I make all my questions around that. सिर्फ 2 लर्निंग आउटकम को कंट्रीब्यूट करता है मेरा कोर्स, मेरे सारे सवाल उसी को फोकस करते हैं। अब आप सोचिए व्हाट इज द पॉइंट। देखिए मैं सिर्फ क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं। अगर फर्स्ट कीजिए इस कमरे में एक शूटिंग रेंज है और आप देखें कि इसने दायरा बनाया, उसके बीच में बिल्कुल निशान लगा हुआ है। आप कहते हैं भाई साहब सच ए गुड शूटर, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, हाउ डू यू मैनेज इट? वेरी सिंपल, आई शूट फर्स्ट देन मेक सर्कल। ठीक है, आप जब सिस्टम को कंप्यूटराइज कर देंगे तो ये ह्यूमन एलिमेंट एलिमिनेट होगा। हाउ डू यू अश्योर क्वालिटी ऑफ द कोर्सेज? आप पूछिए मेरे कोर्सेज ऑफ स्टडी इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में? राइट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, thus it is no such requirement of the university. It is your curriculum that must be mapped. If there is no mapping, there is no course. So curriculum structure and certain features which must be reflected in the program is your job. तो कहां से शुरू होगा आपका? करिकुलम से ही शुरू होगा। फैकल्टी में बहुत बाद में जाएंगे आप। You need to look at the curriculum first, review it and see whether it is compliant or not. Don't look at the SAR. I repeat, don't go for SAR. Start making the foundation first. एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में मैं कुछ ऐसे काम किया मैंने। I said, where is your program? Tell me what they gave. They gave me SAR. This is the program. इससे सब कुछ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम आउटकम भी थे, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव भी थे, ये सब चीजें थी ना। लेकिन सोचिए अगर SAR नहीं होती तो क्या प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहता? चल रहे थे ना। तो हमने क्या तब्दीली किया? हमने SAR बनवा ली ना। अब SAR अलग डॉक्यूमेंट है, कोई नहीं देखता उसको, करिकुलम डॉक्यूमेंट। So what is the first culture you need to embed in your institutions? Curriculum. Standardized curriculum addressing the basic requirements such as PLOs, properly drafted, there is one debate that I would like to have after the session. Should we make generic attributes and put all the programs into that, or should we make program specific attributes? होना तो चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर 12 या 10-12 एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें वो सिर्फ सिविल की जगह इलेक्ट्रिकल कर देंगे और उसकी लफ्ज अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, उसी लिस्ट को चला रहे हैं। My point is, as a QA professional, देखिए, if the accreditation body is happy with that, that's perfect. We don't need to poke our nose into that. But the point is, PLOs, instead of concentrating on the material and content covered, PLOs show how a student can make use of the material and content. Now, if you are producing MBA in Gujranwala, Gujranwala is different, and market of Karachi is different. Program learning outcome will be different. अच्छा, ये PLO should not. अच्छा, ये बताइए कहाँ पर है वो? Is there any table in SAR talking about PLOs? SAR के अंदर कोई टेबल है? बस अलाइनमेंट क्या है ना? क्या नहीं है? मैपिंग का भी नहीं है। नहीं, आप वापस जाके देखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि मैपिंग ऑब्जेक्टिव आउटकम की है, कोर्सेज की ब्रेक के बाद जब खत्म होगा कोर्स तो फिर देंगे, नहीं है। Unfortunately, it is not given explicitly. It is asked within. It is not asked explicitly. तो क्या हुआ? Your curriculum, your SAR does not have proper PLO. अच्छा, उसमें PLO assessment की भी बात की गई है।
SAR के अंदर, लेकिन कोई सवाल पूछा गया उसका स्पेसिफिक नहीं, तो नहीं पूछा गया तो फिर SAR में असेसमेंट भी नहीं होगी। अब ये बताइए, why shouldn't we appreciate engineering faculty? Because they draft, at least whatever they draft, and they assess, and their faculty knows that what they are teaching is contributing here. अब ये गलत बात है, कुछ कोर्सेज में वो शायद मैकेनिकल प्रैक्टिस हो जाए, बट इन मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज दे आर वेल थॉट ऑफ। तो जब ये वेल थॉट ऑफ है तो व्हाई इट इज नॉट मेड अ पॉलिसी फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी? सिस्टम तो बना हुआ है ना। ये बड़े आइडियल्स है जो होते हैं। जब भी हम बात करते हैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी भी ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, आप है, कोई और है, वो इतनी आइडियल सिनेरियोस की बातें हमें बताते हैं कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब ये नहीं बताया है, नहीं सिर्फ बताएं, मगर इनको अप्लाई ऑन ग्राउंड लेवल कैसे होंगे, दिस इज आल्सो गोइंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। जी। अभी के बारे में देखिए अगर आपको याद हो, जैसे दिस पॉइंट मैं थोड़ा सा इसको लिंक कर रहा हूँ चीज से। Perfection. What is perfection? Is there any something which we call this is perfect? No. This is ideal? No. What is the role of artists and painters and poets? They give pictorial of ideas. Pictorial. Everything tries to imitate those ideas. अब कितना करीब आए ये आपकी किस्मत। So my notion is, I'll try to tell you what is the best practice. How closer you come is your fate. If your vice chancellor is cooperative, if your deans are convinced, you can do a lot. For example, in Dow we did a lot. In JSMU we are trying hard, but not for all programs, but for some, alhamdulillah, we are successful. One of the achievement is, कोई program approve नहीं हो सकता academic council से unless it is vetted by QEC as a policy. ठीक है? तब आप सोचिए वो सारे deans वगैरह they come to us that please let us know if it is compliant or not. And on the name of compliance, we try to make them things which are good for them. HEC नहीं मानता हो। SR बनाना क्या मुश्किल है बताइए, मैं उनसे कहूँगा ये बना दो सिर्फ। We make them work on the template. डिफरेंट है ये सारी बातें होना चाहिए। आपने काफी बताया, नहीं बिल्कुल बताया नॉलेज की, लेकिन सर ये एज पर डिसीजन किसी ने ही लगाया QEC को कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, जमा करो, सबमिट करो, साइक्लिंग प्रोसेस, लेबर वर्क, वी आर डूइंग दिस, वी आर जस्ट शोइंग आवर वर्क, नॉट डूइंग आवर वर्क। ये तो क्या HSC ने ये जो आपने कहा ना करिकुलम अंटिल अनलेस विद अप्रूवल ऑफ QEC, ये HSC के क्लॉज नहीं दे सकता है। एज पर ये डिबेट बहुत मुश्किल और दिनों से चल रही है। आपके पास एक रास्ता है, या तो आप फॉलोवर बन जाए या क्रिएटर बन जाए। नहीं, क्रिएटर की बात वो तो बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें देखें, आपने ग्रुप में देखा होगा चैट बॉक्स में कोई पॉलिसी है इस पर, कोई HEC का लेटर है? प्लीज डोंट डू दैट। ट्रस्ट मी, दिस विल मेक यू स्टीरियोटाइप QA प्रोफेशनल वर्किंग एवरीवेयर। If you want to work like a QA professional, you need to go for innovation or change. चाहे थोड़ी सी चेंज आप कर लेंगे ना एक प्रोग्राम के साथ, you will be successful. Otherwise, you will be replicating. आप जो कह रहे हैं HEC सेशन के बाद आपने ला के दिखा दिए कहाँ HEC ने कहा है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन ही करनी है। B is another thing. Only is another thing. सर अभी KPK ने अपने स्टैट्यूट में QEC को इंडक्ट कर दिया। बर्बर साहब से पता करें उनका जनरलाइज स्टैट्यूट में, तो वी शुड टेक अ डिसीजन। हमारे स्टैट्यूट में QEC नहीं, ऐसे डिबेटेबल नहीं। सुने मेरी बात सुने, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? स्टैट्यूट में हो डायरेक्टर QEC उसको हाथ पहना जाए? और फिर मेरी बात सुनिए भाई, you need to establish your role. QEC was not there.
देखिए मैं उस दौर में काम शुरू किया था जब QC लोग क्वालिटी अश्योरेंस के बजाय क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट नाम तक लेने नहीं आता था लोगों। When the post was advertised in for my job, nobody applied. Nobody. जो इस कंपनी ने HEC दी थी उसके ऊपर किसी ने अप्लाई नहीं किया। 2008 में इसको लिया आया था 6 में। पॉइंट क्या है देखिए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, या तो आप कंप्लाइंस पे चले गए, कंप्लाइंस स्टेटस पे आप जिंदगी क्या HEC का लेटर दिखा दो काम हो जाएगा, नहीं दिखाया काम नहीं होगा। At least at our university we have taken the different road not taken. We have taken the road of creating innovation. तो प्रोग्राम हमारे पास आते हैं, हम उसको रिव्यू करते हैं। Now when I say review, I simply mean we make sure that PLOs are there. We make sure that national qualification framework for higher education in Pakistan. आपने PQR का नाम तो सुना होगा, मैंने पिछले सेशन में कहा था PQR का एक डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, PQR एक पोर्टल है, सबको पता है, लेकिन ये उसको इन्होंने किल कर दिया PQR को। पाकिस्तान क्वालिफिकेशन रजिस्टर इज ए डॉक्यूमेंट published in 2015. It has these attributes: knowledge, skills and competencies. इसने हर क्वालिफिकेशन लेवल की ये कॉम्पिटेंस दी हुई है कि कॉम्पिटेंस क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, नॉलेज क्या होनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, यू कैन शेयर इट विद योर फैकल्टी दैट देखिए आप जो PLOs बना रहे हैं वो इस पैटर्न पे कर लीजिए। व्हाट नेक्स्ट? हां ये फैकल्टी में ये भी तो कंप्लीट प्रोग्राम रिव्यू पर रेडी नहीं है। करिकुलम जो डिजाइन हुआ है उसमें भी PIO स्टेटमेंट कर रहे हैं, जो फैकल्टी को रिव्यू जाती है उसकी प्रोग्राम रिव्यू कमेटी होती है ना, वो देखती है डॉक्यूमेंट को। देखिए हाँ, एक मैं आपको इसका बिल्कुल आसान सा जवाब दूं। प्रोग्राम रिव्यू कमेटी एक प्रोडक्ट है, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? इस करिकुलम वाले मामले को हैंडल करने के लिए क्या चीज बनानी चाहिए? QA पॉलिसी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम रिव्यू पॉलिसी, जो कि QEC का डोमेन है। करिकुलम डेवलप कैसे होगा? उसके अंदर यू नीड टू ऐड दैट देयर मस्ट बी 2 स्टेक होल्डर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट? उनके इनपुट के बगैर देयर शुड बी नो प्रोग्राम अप्रूव्ड। If the policy is there and if your dean is convinced, then no new program can be inducted without that. Fortunately, we made curriculum development policy. Unfortunately, we could not bring everyone to that policy. लेकिन हमने कुछ पार्ट से उसके लोगों को लेकर आ गए। The second is curriculum review. Committee is a product. Curriculum review policy is something else. If you recall, I told you that there must be some revision curriculum. अब अगर आप ये चीजें देख रहे हैं, जरा नोट कीजिए इसके अंदर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, राइट? इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। इफ यू जस्ट आस्क योर फैकल्टी कि इस अपने PLOs को टेलर कर लीजिए इसके ऊपर, ये जब आप रिव्यू कर रहे हैं इवन SAR, डू नॉट रिव्यू बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट। वो मुझसे किसी ने एक बात कही थी, वो फायदा वो चेकलिस्ट पे आपने यस लोग नहीं कराया। SAR की चेकलिस्ट बहुत पहले आई थी, वो चेकलिस्ट हमारे जमाने की थी, यानी जब हमने शुरू किया था हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी जरा रफ सी, HEC ने उसको फाइन ट्यून करके उसका हिस्सा बना दिया। दैट वाज ओनली फॉर SAR, वो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करती। सो इफ योर करिकुलम डज नॉट हैव PQR रिफ्लेक्शन, इफ इट डज नॉट हैव कॉम्पिटेंस बेस्ड ऑन दीज डोमेन्स और एनी अदर डोमेन, कोई डोमेन तो होगा ना, लाइफ स्किल। आपके पास लेटर आया था किसी के पास HEC की तरफ से कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ह्यूमन एलिमेंट मस्ट बी एडेड इनटू करिकुलम। क्या ख्याल है आप लोग बताइए, कैसे ऐड होगा? करिकुलम तो अप्रूव्ड है सर, प्रोसेस में जाएगा सर, ये ताकि फैकल्टीज में इनपुट देगा ना। लेकिन आपकी क्या सजेशन है एज ए QA एक्सपर्ट? आपसे करो पूछते हैं, आप बताइए व्हाट वुड यू से? ये तो है, तो पूछो हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट इट इनटू करिकुलम? प्रॉपर स्टेटस को POS हम तो जानते हैं एकेडमिक काउंसिल में क्या होगा।
चाहे इसलिए बार-बार आप मत सफर करने का टेक्निक काउंसिल एक स्टीरियोटाइप सी प्रोसीडिंग होती है। एक्स प्रोग्राम अप्रूव, तो भी इधर तक नहीं पढ़ा होगा। अभी मैंने एकेडमिक काउंसिल अटेंड की थी इंस्टीट्यूट की, एजेंडा आइटम भेज दी गए थे, डिटेल नहीं भेजी। मैं रिक्वेस्ट भेजी कि इसके वर्किंग पेपर तो भेजिए। जैसे डील शेयर जिस दिन मीटिंग थी उस दिन सुबह ईमेल पे आए थे जो मैं नहीं देखा। पूरी मीटिंग में मैं ये समझ रहा कि मैंने बता वो ईमेल पे सुबह आए थे जब मैं निकल चुका था। अच्छा देखिए मैं मेरा पॉइंट क्या है जी, एकेडमिक काउंसिल को चेयर जो कर रहे होते हैं आपको पता है? तो मुझे नहीं पता। Put things on me. देखिए अब ये देखिए अगर कि आप इस टेबल पे क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस नॉलेज, कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, साइकोमोटर, ये 4-5 डोमेन्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए फर्स्ट करें। अब मेरे पीएलओ इस पे लिखे हुए हैं, मेरे पीएलओ इधर लिखे हुए हैं, पीएलओ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। अगर इसमें डिवाइडेड है, अब देखिए ये कोर्सेज लिखे हैं, इन कोर्सेज के साथ अगर मैपिंग हम की हुई है, वेल थॉट ऑफ, then every teacher knows his business. If it is not well thought of, teachers will be playing with the course. ठीक है, आप किसी भी फैकल्टी से बात करें, एफडीपी क्या हम बात करें ना, किसी ने कहा ना एफडीपी होनी चाहिए, देखिए एफडीपी आप 50 करा रहे हैं। The ground reality is if you sit with them and tell them that this is not the case. Look at this. अब इससे मुझे मसला बताइए, what is the मसला in this mapping? Any idea the potential issue in this table? Very directional concept को cover नहीं करने के लिए क्या कुछ कोर्सेज इंट्रोडक्टरी के एडवांस में उनका कॉन्ट्रिब्यूशन। अच्छा देखिए, अब मैं आपकी आई एम टॉकिंग एज ए क्यूए एक्सपर्ट, लुक एट दिस, this is suppose a PLO. By the end of the program, student will be able to identify, will be able to demonstrate understanding of engineering problems. उसमें ये कोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ ये कोर्स फर्स्ट करने ये इसके आगे लिखा है। अब I stand for introducing the concept, P stand for proficient, and advanced level contribution is A, IPA. ये SAR की टर्म है। अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो दूसरी जगहों पर टर्म सेम है। Introducing the concept, reinforcing the concept, R, M mastery of the concept, and A assessment of the concept. ठीक है, ये HEC के SAR है। अब आप जब ये देंगे तो इसमें देखिए पोटेंशियल इशू क्या है। Every course is contributing once. ठीक है, तो आगे इसका क्या होगा उस कॉन्सेप्ट का। नंबर 2, इधर देखिए ये जो भी 3.1 है, आई एम गोइंग अलोंग ए, कोई कॉन्सेप्ट भी डायरेक्ट ए पे नहीं ना, या तो वो किसी ऊपर वाले पीएलओ से लिंक हो तब तो मुमकिन है, वो भी बहुत मुश्किल है। Otherwise, every concept must be introduced, reinforced, mastered, and then assessed. Yeah, if you want to change the terminology, you need to understand one thing. There is a progression. एक बात बताइए मेरा, 4 साल का प्रोग्राम है, बच्चे ने 3 साल पढ़ा। अगर आपसे पूछा जाए किसी कितना आ गया, कैसे बताएं? I repeat my question. 4 साल का प्रोग्राम था, बच्चे ने 3 साल पढ़ लिया, अब वो छोड़ के जा रहा है, कितना लिया उसने, कैसे बताएं? वही पूछो कैसे पता चलेगा, वही पूछो कैसे। क्योंकि बच्चे के लिए आप असेसमेंट तो नहीं करेंगे ना, आउटकम असेसमेंट भी
कैसे मतलब कौन सी ग्रेड 3 साल पढ़ लिया उसने, चौथे साल में जा रहा है वो, आपको देखना है, अलग से आप नहीं कर सकते। हाउ वुड यू नो कि अब उसको कितना आ गया? अगर मैपिंग सही से हुई है, इस मैट्रिक्स से पता चलेगा ये कोर्सेज यहाँ तक गए हैं, फर्स्ट हैं कोने तक, और यहाँ पर बच्चा जा रहा है। आपने इस पूरे को उठा के देख दिया, कितने कोर्सेज में वो ए अचीव कर चुका है, ए ग्रेड नहीं, ए एडवांस लेवल ऑफ एंजिनियरिंग, और कितने कोर्सेज में वो इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, कितने कोर्सेज में वो मास्टरी लेवल पर है। दैट्स इट। यू कैन इजीली सम अप दैट इज। और ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज करती है, दे कैन कैटेगोरिकली इन्फॉर्म द स्टूडेंट कि इस वक्त इसकी लर्निंग इतनी हुई है, वो तो परसेंटेज में भी बता देंगे थ्रू द सॉफ्टवेयर। माय पॉइंट इज, as a QA professional, you need to understand the best practices is to have mapping, but you need to know how mapping has been done. Then, अब आगे करिकुलम कोर्स लेवल पे HEC क्या करता है? कोर्स टाइटल, दो चार लाइन में इसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद फिर कोर्स का प्लान। एक सबसे बड़ी खतरनाक बात है ना, which is the confusion, national confusion. एक लफ्ज ऑब्जेक्टिव वो भी इस्तेमाल करते हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम बाद लोग ये इस्तेमाल करते हैं। If you are talking about a system, you need to understand that course objectives से अगर आपकी बात है course learning objective, so that's a term that was used back in 80s 90s. It has been replaced with learning outcomes. If you are talking about learning, if you are talking about learning objective, if you are talking about instructional objective, that is different. ठीक है? क्यों इसको फंसाते हैं फैकल्टी को? बस लर्निंग आउटकम बनाने दें उसको, कोर्स लर्निंग आउटकम। तो लेट्स टॉक अबाउट करिकुलम कोर्स। सॉरी, अगर आपको नहीं पता कि कोर्स कैसे बनना है, तो आप कैसे फिर क्यूए को वो करेंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोर्स प्लानिंग रिक्वायर्स नंबर 1 मैपिंग अवेलेबल। तो जो एसआर के अंदर मैपिंग बनी है, ये तमाम हेड्स के कमरों में लगी होनी चाहिए मैपिंग। जब कोर्स असाइन कर रहे हो तो दे नीड टू नो कि ये कोर्स क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसके जाने से कितना नुकसान होगा। मैपिंग विल टेल यू कि कोर्स को कैसे डिजाइन करना। देखिए, अगर आपकी, मैं थोड़ी सी वो ले रहा हूँ लिबर्टी, अगर आपने रेमन मार्टिन फंक्शन इंग्लिश के लिए ली है, अगर आपने मर्फी की इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की रखी हुई है, तो यकीन रखिए कि यू आर इन द बैंड बैटन along with everyone. मर्फी के कितने हिस्से आपके पीएलओ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखना है आपको। You don't have to teach them the entire book. जो कोड टेक्स्ट कहते हैं ना, कोड टेक्स्ट does not work in all cases. Then course structure, एक कोई शक्ल तो हो ना, you need standardized system. कोई लर्निंग आउटकम बनेंगे वो कोर्सेज के, अब वो कैसे बनेंगे? अगर मैपिंग नहीं है तो कैसे बनेंगे? अच्छा, अगर फैकल्टी ने बना लिए आपके कहने पर, तो वो भी एक गलती, तो मक्खी में मक्खी बिठा रहे हैं। यकीन रखिए, यू आर नॉट अश्योरिंग क्वालिटी, यू आर एक्चुअली पाइलिंग अप द बंचेस। क्यों भाई? कोर्स लर्निंग आउटकम कैसे बनाएगा वो अगर उसको पीएलओ नहीं पता? और पीएलओ ऐसे यार किसी के पास है। तो वो स्ट्रक्चर नीड टू डेवलप अ टेम्पलेट। एवरी गुड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स अ सैंपल, ये हमारा टेम्पलेट है। QEC मेक श्योर कि उसके अंदर essentials of curriculum are addressed. I visited a very famous institute in Karachi, very famous. But there is no harm because this is a good thing to talk about. Indus Valley School of Art Architecture, divinely mad people. They had a system of making course specification. Some headings were not formal, but the system was really good enough. अगर आपके पास वो बना हुआ है, and they made it, the only missing thing was mapping with the PLOs. ठीक है? तो अगर आपके कोर्स के structure is based on the mapping, then you know your business, क्या आपको कराना है क्या नहीं कराना है।
इसके बाद आ जाइए assurance of planning. I deliberately put this term, assurance of planning. इंस्ट्रक्शन में पढ़ा दिया, अगला कोर्स भी पढ़ लिया, उससे अगला कोर्स पढ़ लिया, बच्चा आगे जा रहा है, वहीं रुका हुआ है, क्या हो रहा है? How do you know? कैसे आपको पता प्रोग्रेशन चल रही है? ठीक है? How do you assure that learning is taking place? Right? I leave this question for the next. Following slides will be addressing that. अब देखिए, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, if you do not, अच्छा अब आइए faculty development. What are the areas required for faculty development? Not professional development, faculty development as a faculty. They need to be trained how to write effective CLO. ठीक है? और वो कब हो सकते हैं जब उनके पास PLOs होंगे, उसके बगैर नहीं हो सकते. So please arrange a session for PLOs first, then go for CLO. Anyway, and this is ये टेक्सोनॉमी पे हर शख्स बात करता है, हर शख्स बात करता है. My point is, as a QC professional, you don't need to learn all these steps. You need to make sure कि क्या ये properly addressed है with progression या नहीं. इंग्लिश टीचर जब पढ़ाने आता है तो आप उससे कहते हैं कि मैं फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाऊंगा. तो फंक्शनल इंग्लिश कौन सी होती है? I gave this example because my major is also English. I don't know what functional English is. Some people say technical English, some people say business English, some people say professional English. These are the names, right? वो सबका सेम है, वही है, टेक्निकल इंग्लिश है या मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, वो एक है. इसलिए कि आपके पास कोई प्लान नहीं था. अगर QEC बात करता है फैकल्टी से, तो देखिए आप बगैर उसके नाम बनाए. If you tell the head that faculty cannot make it unless you provide them mapping, तो फिर SAR की मैपिंग जरूरी हो जाएगी. ठीक है? I'm using deliberately the word SAR. Otherwise, SAR by product है. असल चीज है मेन करिकुलम डॉक्यूमेंट. अगर उसके अंदर मैपिंग हुई भी है, एवरीथिंग इज फाइन. इसके बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट था टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का. आपका टीचर टेस्ट भी बनाता है, टेस्ट बन गया. अब टेस्ट हुआ नहीं हुआ, यानी आईपी टेस्ट जो ले रहा था, क्या वो वाकई उसी चीज का टेस्ट था जिसके लिए उसको दिया गया था, या उसने पॉपुलैरिटी टेस्ट दिया? व्हाट इज पॉपुलैरिटी टेस्ट? स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस. हेनरी कोरी, मेल्डन, एक साल हेनरी कोरी, दूसरे साल मेल्डन. याद कर लीजिए. कॉलेज लेवल पे तो मैंने तकरीबन 6 साल यही पढ़ाया था. एक साल हेनरी कोरी याद कर लो, दूसरे साल मेल्डन याद कर लो, आ जाएगा. राइट? व्हाट इज टॉस? देखिए, अगर आपके कोर्स के अंदर टॉस नहीं है तो आपने टीचर से कह दिया जो दिल चाहे तो. व्हाट इज टॉस? मैं एग्जांपल से बता दूं क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है. प्लीज मेक श्योर we will not be able to grasp all the topics together. This is a gist of what are the best practices in QA. अगर मैं आपसे कहूं अपने कोर्स के नंबर या कोर्स के लर्निंग आउटकम यहाँ लिख दीजिए, 5, 6, 7 जितने भी आपने कोर्स के बनाए हैं. उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि ये आप असेसमेंट करने जा रहे हैं ना, क्विज, असाइनमेंट, मिड टर्म, फाइनल, ये 4 करते हैं ना स्टैंडर्ड. अगर आप 5 करते हैं, 5 लिख दीजिए. उसके बाद यू नीड टू मार्क CLO1 किस में असेस करेंगे, CLO2 किस में असेस करेंगे, 3 किस में करेंगे, 4 किस में, 5 किस में, 6 किस में. अब फर्स्ट कीजिए, आप QA एक्सपर्ट हैं, HOD ने आपको बुलाया कि उस्मानी साहब या आदिल साहब बताइए इसमें क्या इशू है, क्या इशू है इसमें, क्या बताइए. 6. अच्छा, वेरी गुड. ठीक है, CLO6 असेस नहीं हुआ, एक तो ये मसला हो गया. 3 एक दफा हो रहा है. ठीक है, तो अगर क्विज आप जो है ना कंटिन्यूअस ले रहे हैं 4-5 चीज को, इसको हर किसी में आप मैसेज करो. ऐसे मल्टीपल ये लोग जैसे आप एक मल्टीपल स्टेजेस पे एसेस होंगे, कोई से टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एक्टिविटी सिर्फ एक ही ये लोग करें. मैंने कहा भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं मतलब इसके अंदर आप क्या सब बता रहे थे. कोर्स करने के आपने एक 4 क्लास की, उसके बाद आपने क्विज दिया जो कि आपके CLO1 से मैच करता है, फिर उसके बाद 4 क्लास से फिर CLO2 से या 3 से मैच करता है. तो ये आप ये कह रहे हैं ना, ये वाली बात ठीक है, बात कर लीजिए.
भाई मार्किंग का ही तो मसला है ना, आप इसके आगे लिख देंगे 4 क्विज़ेस और 1 2 3 4 जगह आप कर देते हैं ना। अब बताइए मिड टर्म तो एक ही दफा होगा ना, मिड टर्म नहीं होगा। मिड टर्म में क्या मसला है आपको, मिड टर्म में कवर करेंगे कितने सीट्स? नहीं बताइए कितने कवर है, लिमिटेड है ना, Limited। इसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अच्छा लेकिन एक बात बताइए मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए, 2 में मसला क्या है या कोई मसला है भी नहीं? टू का सीलो जनरलाइज है, जनरलाइज तो नहीं कभी होता, सब में लेगा ना, कोई सीलो जनरलाइज नहीं होता, तो वो सब सबसे ज्यादा इसको अगर सबसे ज्यादा इसको कवर किया है तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस दैट इट इज असेस्ड ओनली वन। ये वो क्रिटिकल क्वेश्चन है जब एचओडी पूछेगा अपने फैकल्टी से, एंड फैकल्टी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड, राइट? ओके, तो पहला हमारा करिकुलम, अब करिकुलम खत्म हुआ। देखिए आपने करिकुलम में क्या क्या किया, यू टुक curriculum document, you started reformation of curriculum, then you move to courses, reformed courses in consultation with the dean or the HOD, then comes the students. Up QA ka next, what is the next agenda? Students, right? Now students, the first problem comes with the intake. In some university there is an admission test, some university there is no, right? Yeah, this is a formal admission test only for formality, there is no specific reason. You need to see whether this test which is being conducted is standardized or non-standardized. इसका मतलब क्या है? You'll be asking, requesting the admission department, देखिए, whether you do it or not, that's a different question. You need to know at least that your admission department should be informed. जैसे हमारे पास, you will be surprised, before publication of any advertisement of admission, it comes to QC. देख लीजिए इसमें कोई इशू तो नहीं है। For instance, एक प्रोग्राम था उसके आगे लिखा हुआ था आर्ट्स स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई, और टेस्ट का स्ट्रक्चर लिखा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट? I don't know how come this is possible. The point is, if the intake is governed or monitored, we'll be expecting at least some stuff. अच्छा, in private universities which are average or below average, they may not take the risk. They're accepted now. But if you are working for a better university, private or public, you can make sure that admission is given based on some criteria. Then, role in teaching and learning. Students' role in teaching and learning. And if you have a question, what do you suggest? अभी पिछली conference में शायद Anka, do you remember Anka who presented her paper at Coach? If anyone who remember, at keynote. My question is, what is the role of student in teaching and learning? Recipient? The recipient के अलावा बताइए। The participants, they should be from the planning to the जी, आप ये बताइए इसी स्टैच्यूटरी बॉडी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होती है? No, there is no, right? If there is no, can we start consultation at some point before viewers? Before viewers, we can take senior students. Graduating student can tell you a lot about the program problems. करिकुलम डेवलपमेंट व्यूअर्स से पहले आईएबी कंडक्ट करें, इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड, वहां पर उन्होंने अलुमनाई और स्टूडेंट्स को मैंडेटरी रखा है। कुछ इंडस्ट्री ने अलुमनाई को रखा है। नहीं, alumni is different. Student is different. देखिए, my point is what? If the students are not represented in various forums, you will be taking decisions for the cows who are the source of your income. Okay? The only thing is they need to be taken on board for various decisions. In this case, we are still deficient at GSMU. हमने कोशिश पिछले साल ही we took this idea. We'll be trying to take on board some students. कुछ public sector के मसले होते हैं. We are trying to avoid that, but we'll take them on board at some point of time for small programs in the beginning. ऐसा देखिए, अभी हम लोग अपने आप को कर भी लेते हैं, पर हम कुछ नहीं बता सकते कैसे क्यों करेंगे। अब सबसे
सबसे पहले अब हम आगे ऐसे आज की परफॉर्मेंस पे पहला परफॉर्मेंस स्टूडेंट की वो फीडबैक ठीक है और भी 2-3 जब ले ली तो वो तो घर के रख लिया वो मैकेनाइज और टेक्निकल के लिए आईटी से रिलेटेड तो फिर की करना है जो आप कह रहे हैं ना स्टूडेंट को ऑन बोर्ड लेने का तो बहुत हम अपने लेवल पे जहाँ करें उस लेवल पे लिया जा सकता है हमको लेकिन हम अगर उसमें एलिमेंट ऑफ वेटेज अगर हम उसको वेरीफाई तो आराम से उसको किया जा सकते हैं पॉइंट इज देखिए पॉइंट इज वेरी सिंपल ये मेरी सजेशन की फीडबैक फॉर्म को थोड़ी दिन से भूल जाए एचईसी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं आपको भी पता है आप सबको पता है कि आप फीडबैक फॉर्म 100% कंप्लायंट कर सकते हैं बट दिस पॉइंट टू स्टार्ट आप सिर्फ ये करें कि स्टूडेंट एंगेजमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट Good. So देखिए, this is one of the best practices, right? That can be replicated. So we'll be requesting you to. Good. Feedback is impact. I will not call it HEC feedback form, but I will go for real-time feedback and its impact. अगर फीडबैक का इम्पैक्ट बच्चों को नहीं दिखता तो अगली दफा से वो फीडबैक नहीं देते झूठा फीडबैक देते क्योंकि आप उनका एडवर्टाइज होगा राइट नाउ हाउ कैन वी अश्योर दैट फीडबैक हैज इम्पैक्ट आई suggest which we have started recently take some point which you can manipulate and then join students orientation session and demonstrate how you have brought some changes based on student feedback. The reason why students come to us is because we try to give this, we respond to each theory, whether it is relevant or irrelevant. We try to respond, not resolve, but we try to respond because they need to have understanding कि कोई कान तो है जो सुन रहा है. Public sector इस मामले में बहुत बदनाम होती है ना कि सुनती नहीं. We convince and tell every department to respond at least that your problem is your case is under review or your case is in this stage, right? So feedback is not real-time feedback. It's not about HSC feedback. And then mentoring and advising. देखिए हर जगह student counselors होते हैं, advisors होते हैं, but I would suggest reading something about mentoring. We need mentors instead of advisors. Mentors who are associated with the students, although the size does matter, but at least if you can start with some model, beginning from, for example, in our MBBS, हमने MBBS में model किया हुआ है that we have mentors, faculty as mentors, who is responsible for personal and professional growth of the students. So this model can be replicated in other universities. Mentoring as a system. Yes, please. Sir, what's your take on students as members for mentors for freshman students, like senior students? Okay, that's what I said. When you design a plan or program, you decide whether you are going to assign faculty as mentors or student as mentors. उसमें कुछ हमारे societal issues आते हैं, assigning seniors as mentors. But if we, inshallah, sometime in life, जब एक civilized society हो, वहाँ this may happen. This may happen. It works very well because the students also एक दूसरे को understand ज़्यादा कर सकते हैं. It works very well if That's what I'm saying. उसमें variation होती है. You cannot go for a blanket application of this program. Okay. अब आ जाइए faculty development, right? Beginning from staying current in the field, this is the first notion, and then assurance of learning from faculty end. क्योंकि faculty से पूछे सुना, रेशिपी साहब आप जो faculty course review report, do you agree with that report, that performer or not? Absolutely. आप देखिए कितना अजीब सा फॉर्म है. आपने चेंज कर लिया ना, लेकिन majority of the universities are either not doing it or doing it on paper only. आपने उसमें प्रोग्रेशन का कोई एलिमेंट डाला नहीं है, आपने उसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कोई पोर्शन डाला नहीं है, उसमें आपने
post assessment analysis नहीं डाली, so what do you expect? So faculty should be, or if I don't use the word should be, you need to know that faculty needs to first analyze the course. Faculty course report मत भरवाएं जब तक आपके पास useful heads ना हो. Useful head means specific data. इस दफा आपकी क्लास में इतने बच्चे, for example, in one of our case, एक यूनिवर्सिटी में मुझे केस पर चला, 80% student failed in a course, 80%. They applied for scrutiny. उस 80% में से 70% पास. क्यों? The faculty is least bothered. उन्हें सवाल दे दिया, अब ये नहीं पता था कि की जो दी गई है वो की मिसमैच कर रही है. वो जिसकी मिसमैच थी सब फेल होते गए. जब स्क्रूटनी में पता की मिसमैच थी, स्मैश कर लिया. वो जो बार-बार लोग कह रहे होते हैं ना, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, for heaven's sake, human element cannot be eliminated. You need to see. एक बार दिलचस्प लफ्ज़ है, अगर आप लोगों को याद रहे, controls. There should be some controls on the procedures. It should be human governed. वो क्या क्या होता था? जैम में सील होके आया है, कंट्रोलर ने नहीं खोलना है इसको. कंट्रोलर से सील सुधार चला गया कंप्यूटर में. एक बच्चा जो था उसको वहीं बैठ रहना होता है, बाहर नहीं कर सकता वो. उसको वहीं फीड इन करना है. कंट्रोलर से क्लिक करेगा, एग्जाम 4 एग्जाम तकसीम होकर चला जाएगा. जब तक पेपर खत्म नहीं होगा वो बच्चा बाहर नहीं आएगा. Where is the human element? No human element. सब कुछ मैकेनिकल. जवाब हो गए, कॉपीज डालिए, ओ टिक मार दीजिए, रिकॉर्ड मार दीजिए. कॉपी चेक हो गए, रिजल्ट हो गया. 3 दिन में रिजल्ट हो जाएगा. The point is, assurance of learning from faculty. They need to record whether they have done something or not. And secondly, inclusivity. Staying away from the current, personal. Leading the person and being a representative of the class, including everyone on board. आपको भी पता होता है as a faculty, कौन सा बच्चा प्रॉब्लम में करे, कौन सा नहीं. We need to create a culture of inclusiveness, in which learning is done through understanding of the learner, not the qualification of the teacher. Okay? And now, what is your role as a QEC? Not to tell faculty to do it. We just need to create professional development opportunities and have some discussion as to what is desirable. That's it. अच्छा देखिए, इसके अलावा मनवा साहब ने जुमला इस्तेमाल किया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, राइट? माय क्वेश्चन इज, regularly assessing student learning and providing timely, meaningful feedback to help them make progress. Is it practiced? Come on. The concept जैसे वो कह रहे थे QEC के, तो बेसिकली करियर में कल्चर ये है कि पहले स्टार्ट कॉल, तो आप पहली क्लास में ना एक छोटा सा क्विज देते हैं जस्ट टू सी, और आप अपना KPI सेट कर देते हैं. क्विज में लगभग 5 नंबर आए, 5 दिन के बाद तो वो इनके यहाँ से देखते हैं क्लास स्टैंड का करती है. वरना अदरवाइज ये होगा कि जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे चलते रहेंगे और जो बेचारे पीछे हैं वो आपको पता ही नहीं है. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में पता लग जाता है कि हमें कितना लैकिंग देखते हैं, तो वो असेसमेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा काम देता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है. मतलब क्लास तो आगे चलती रहेगी, वो करते हैं. So there should be a separate workshop on formative assessment. The bottom line is, the one is, देखिए, where's the point क्या है? मेरा point ये है कि copies जब आप share करते हैं, प्राइवेट में सीधे share करते हैं copies, except for finalizing, midterm तक share करते हैं. My question is, sharing of the answer script with the students, what they have done, how is it going to be useful? आपको mark कर देना. The damage is done. When the damage is done, how would you repair it? अगर आप इसको देखिए, if you look at this table, I, being the head, would say, if damage is done here through the quiz, this damage can be rectified in the final. But damage done here cannot be rectified at all.
So formative will help you diagnose whether students really need something in this or not. Yes. मोस्टली असेसमेंट के नंबर होते हैं 100, ये 30 और 40 फिक्स है या जो भी 20 और 30 फिक्स है, सारा टाइम तो मेहनत थोड़ी हो रही होती है इनमें तो सेंटर और मिड टर्म में, फिर कैसे फाइनल मिड टर्म बाहर मेरा ख्याल है कि formative के लिए we need to sit again sometime in the future to discuss, because what you are saying is mark space and that is conscious judgment and not formative. और डायग्नोस्टिक का बहुत इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक Really, the thing question, man, usually I try to avoid using terminology. क्योंकि फिर क्या होता है वो आपके ध्यान में वही हॉन्ट करती रहती है. My point is very simple that the assessment should be focused, systematic and based on feedback. अगर आपकी फैकल्टी ने ये बनाया हुआ है तो उसको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था, वो बच्चे को वो ही बताएगा कि तुम्हारे सवाल में ये मसला है. लेकिन अगर फैकल्टी ने बनाया ही इस तरीके से या फर्स्ट ये 2 जगह टिक किया होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है, वो बच्चे को एग्जैक्ट बता सकता है योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, योर एप्लीकेशन इज नॉट सुटेबल, application of the concept. Yeah, I'm surprised your concept is not clear but your example is correct. ठीक है, अगर ये 2 जगह एक ही टेस्ट आइटम से हुआ है, define the validation and apply to a real life context in a public park. These are 2 folded questions. Focusing on knowledge and focusing on the application of knowledge. ठीक है, application at some point of time. अच्छा, तो इसके बाद देखिए collaboration between faculty and students. It's not about faculty representative या class representative CR सारे काम कर रहा है. It's about a confidence between, जैसे हम आपस में very comfortable. When I am taking a class, I try making students as comfortable as possible. I tell them in the beginning that there is a difference between badtamizi and lighter note. Lighter note is acceptable. Going beyond the lighter note is not acceptable. And everyone knows when you are trying to please others or when you are creating a lighter note. Right? So if there is a collaboration between the two, and if the faculty knows what experiential learning is, अच्छा टर्म तो आपने बहुत सुनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अगर आपको याद है हमने लास्ट सेशन जो किया था हम लोगों ने सारा एक्सपीरियंशियल था ना, एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर आपने यूपीआर उठाई उसके ऊपर काम किया. तो why can't you replicate the same as a faculty in your class? If you are telling them that this, I remember comics, मैथ्स की टीचर ने मुझसे कहा, मैंने हाउ डू यू अप्लाई मैथमेटिक्स. सर मैं बच्चों ग्राउंड में ले आता हूँ, उनसे कहता हूँ इसको मेजर करो, मेजर करके इसका एरिया निकालो, ये निकालो, वो निकालो. दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पुटिंग देम इनटू अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग देम लर्न थ्रू बाय डूइंग. सो फैकल्टीज रोल, यूजुअली फैकल्टी को तो बस कहा जाता है कि डीन साहब ने बात कर ली, फैकल्टी ने आपको इनपुट दे दिया, थिंग्स आर डन. Then comes the most important thing, assessment practices. QEC, as a QEC representative, you need to understand 2 basic things. You need to demand evidence of learning. There must be some evidence. If there is no evidence, there is no learning. Evidence not चाहिए, midterm चाहिए, नहीं. अगर कि उसके टॉस में, midterm में कोई specific learning मांग है, तब IB बनानी है. Right? Similarly, processes. कभी आपने एग्जाम डिपार्टमेंट को बड़ा सेक्रेट समझा जाता है ना कि उसको कोई टच नहीं करेगा, उसके बाद भी नहीं करेंगे उनसे कोई, ठीक है. बट व्हाट अबाउट प्रोसेस? एक यूनिवर्सिटी का नाम लेने में थोड़ी सी टफ बात है. मैं वहां पर एग्जाम डिपार्टमेंट साहब मुझे कहा गया कि काम करें.
ट्रस्ट मी, उस यूनिवर्सिटी के ऑडिटर ने उनका बिल रोक लिया। They said bring SOP first of exam. They came to us and we took it as a blessing. SOP के नाम पे हमने पूरे एग्जाम का एक मैकेनिज्म उससे बनवाया, कंप्लीट एग्जाम मैकेनिज्म। और अब क्या होता है, since I am regularly in contact with them, कोई मसला एग्जाम का अटकता है, एग्जाम का मसला, तो they say QEC has prepared this SOP, right? The point is, what are the processes? एक आसान सी मिसाल, जिस जगह सब फेल हुए थे, अगर वहां ह्यूमन चेक होता रिजल्ट के ऊपर, तो डिक्लेयर करने से पहले they would have stopped. 80% failure or more than 90% passing is not good, right? You need to review. That's why they need to have a quality assurance person. बस पोस्ट निकालने वाले आदमी quality assurance करता रहे हर चीज पर। Controls लगा के रखते हैं। No result will be signed unless head looks at the contents. फिर प्रोसेसेस तो बन गए, सारे प्रोसेस बने होते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, इस तरह बनेंगे एग्जाम। What are the outcomes of that processes? What are the outcomes? For example, रिजल्ट आ गए। एक आसान से मैं आपको एग्जांपल देखें। Say for example, you have one result of this course, another result, third result, fourth result, fifth result. क्या क्या एविडेंस तो आपके पास है ना, उससे कहिए मुझे इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। Significance. He will either go for reliability or validity of the score. एक कोर्स दूसरे से कोरिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है, तीसरा चौथे से नहीं कर रहा, तो चौथे को दूसरे से करके देखा, नहीं कर रहा, पहले से थोड़ा कर रहा है, कोरिलेट। There is a problem in चौथा। I repeat, 4 कोर्सेज के आपने रिजल्ट लिखे, 200 बच्चे हैं उसके अंदर, नो प्रॉब्लम। एक्सेल शीट पे सिर्फ कोरियल का फॉर्मूला लगाना है, डेटा एनालिसिस आप मत कीजिए, उससे पूछिए क्या इसमें कोरिलेशन है नहीं, एंड यू नीड टू डिसाइड कोरिलेशन कितनी रखनी है, 0.8, 0.9, 0.7। अगर आगे का आवाज गिरा हुआ है तो 0.6 से शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा, तो 0.6 तो हो, हालांकि बहुत ही पैथेटिक स्टेट है, बट एटलीस्ट 0.6। Then you will realize. I was teaching a course of business communication और मुझसे एक बच्चे ने कहा सर हमारे पड़ोस के बच्चों के सबके बच्चे 90 मार्क्स आए, आप 70 मार्क्स ऊपर ही गए, and my course was entirely experiential course, experiential based. They have to use everything in the real life. तो अब जब कोरिलेशन निकालेंगे तो मेरा कोर्स तो कोरिलेट नहीं करेगा, उसके बाद किसी और से भी नहीं करेगा, हो सकता है क्योंकि सबने इजी मार्किंग की थी, तो क्या होगा, मुझे बुलाया जाएगा। I will appear before the faculty board and I will explain the mechanism I have used, and then they would be asking questions from these 3 courses. Did you get my point? This is what we call quality control from the mechanism. एक टर्म याद रखिए एज ए क्यूए प्रोफेशनल, बैकवॉश इफेक्ट या वॉश बैक इफेक्ट। आप बस आसान से सवाल पूछ लीजिए कि इस आपके प्रोग्राम या आपके जो रिजल्ट्स हैं इसका वॉश बैक इफेक्ट क्या, बच्चे आपको बताएंगे वॉश बैक इफेक्ट। अरे मुनीर सर तो बहुत ही हल्के हैं, बस फला उनके नोट्स याद कर लो हो जाएगा। इन माय मास्टर्स प्रोग्राम दिस हैपेंड। मैं बहुत डरा हुआ था एक टीचर से, वो जिस तरह की अंग्रेजी पढ़ाते थे मुझे समझ नहीं आती थी, वेरी टफ, बट पीपल से नो प्रॉब्लम, जस्ट मेमोराइज 3 questions, he'll be giving 2 out of 10, and he did that. आपको पता नहीं ये बात है बैक इन 90s, अब अल्लाह उनके लिए आसानी करे उन्होंने क्या चेंज किया नहीं किया, बट इट वाज अ ट्रेडिशन। दिस इज कॉल्ड बैकवॉश इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग on teaching. This can be negative, this can be positive. If it is negative, you need to question. If it is positive, you need to encourage. और ये सब कब हो सकता है,
सॉरी, ये सब कब हो सकता है जब आप पोस्ट एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं. तो QEC का एक रूल which I suggest should be the best practice to be adopted by all is insisting on post exam analysis. That's it. Okay, I'll be a bit quicker. Management, people usually skip this part. Without management, you cannot do anything. कुछ नहीं कर सकते आप. So there should be collaboration between faculty and administration. If no collaboration, no outcome. When I say collaboration, I simply mean to say, अगर वाइस चांसलर या डीन को ही नहीं पता कि PLOs बनने चाहिए या SR की रिक्वायरमेंट क्या है, या if you have not briefed them, how on earth you can implement at the grassroots level? So the first orientation, we had a session. वाइस चांसलर्स के लिए एक ट्रेनिंग हुई थी, HEC ने करवाई थी 2-3 दिन की. We had a session for QEC as well. We requested the vice chancellor categorically, sir, your role is to give a support, provided your QA professional is a real QA professional. ये नहीं कि हर काम में आप support कर रहे हैं, whether he can do it or not. Then encouraging innovation. Without the help, देखिए अगर class से शोर आ रहा है ना, if the head is not convinced that interactive class is a good idea, you cannot do it. Similarly, if you are taking the student outside the class, asking them to go for a real life experiential learning of what we call human approach to communication, going to a hospital, your head may stop you, your dean may stop you. So, if there is no effective collaboration and encouragement for innovation, you cannot do it. So you need to see as a QA professional whether the idea you are promoting is innovative or effective or not. Finally, accreditation external review. This is the missing element और सिर्फ हमारे business school कर रहे हैं. We are not seeking an international accreditation, though it is costly, but this is branding these days. आपने सुना होगा कि वो LUMS ने WCSB की accreditation ले ली. अब पूरे पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया हो गया कि LUMS ने लिया, हमने भी लेना है. IBA Sakhar is running in the line. IBA Karachi is doing the same. IOBM is doing the same. The point is, just stay for a minute and ask yourself, have we established QA practices within our context and ready for the next level or not? If yes, go for the next, otherwise don't go. This is the same case which somebody was not happy with that statement. हम international accreditation क्यों लेते हैं? Sorry, international membership. इनका ही की, APQM की, हम उनके donors बन गए. 250 universities paying $500 each. Imagine the huge amount we are sending to them with no benefit, not at all. पे कर, अभी एक सवाल मैंने फोन पे कहा, स्वागत आपने बड़ा गलत किया, मेरे बीच ने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे, क्योंकि आपके उस्मानी साहब ने कहा. This is what he said. I tried convincing him. मैंने उनसे इतना कहा, देखिए, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया, 2 नंबर कट रहे हैं ना. अपनी यूनिवर्सिटी के $500 बचा. अभी एक इंटरनेशनल क्लिनिकल रोटेशन की एक टीम है, आपको पता है अमेरिकन आर मनी ओरिएंटेड. They made an organization. They are asking $400 for 6 months. For full year $800. किस बात के कि हमारा बच्चा वहां जाके क्लिनिकल रोटेशन कर सके. Why should we go for it? Our student can do it directly on personal level. If we are paying to them, it means we are feeding them. Then, providing environment of learning resources. This is stereotype, classroom climate, ICT resources, and library that needs to be addressed. Some question which I leave as a food for thought, as a closing remarks. आपके पास ये questions होंगे, इसके जवाब पर discuss कीजिएगा. Use it as a resource for your future discussion. Curriculum. What are students expected to learn? This is the question you should be asking from your chairman of the department. Are courses goals appropriate? Is content aligned with the curriculum, and does content represent diverse prospects? अगर content वही HEC की copy paste है तो फिर बच गया. Similarly, what impact do courses have on learners? Impact of course.
What is the evidence of student learning? कोई evidence आ रही है या बस courses आगे चले जा रहे हैं? And finally, are there efforts to make achievement equitable? Are there efforts visible at the level of the department or not? These are some of the questions which you may raise your academic council or a viewers meeting with the program custodians. Similarly, students, are the students part of our academic decisions? If not, how do you plan to take them on board? Does the student experience learning by doing, experiential learning? Does the student participate in learning? Is the progression monitored? क्या आपको पता है कितने बच्चे अगले साल गए? उससे अगले साल कितने बच्चे गए? ड्रॉप आउट रेट क्या था? अगर ड्रॉप आउट था तो क्यों था? 100 बच्चों ने दाखिला लिया था, 90 अगली क्लास में चले गए, लेकिन क्यों गए? Are they happy with what they are doing? कोई यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस सर्वे है? No. Is there any centralized mechanism of recording grievance? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो जो वेबसाइट में पॉलिसी बना दी एक्सपीसी कहने पर. Real time feedback. Then teaching practices. How is in-class and out-class time used as a faculty? अगर in-class time PowerPoint पे चलता है, out-class time ऑफिस के अंदर गुजरता है, the faculty is just are just delivering what they are asked to deliver. They are not contributing. What assignment, assessment, and learning activities are implemented to help students learn, and are students engaged in the learning process? अच्छा, first मैं मिसाल ले रहा हूँ आपके साथ. Just before I close this, if I add one column here, और उसके आगे 1 to 5 Likert scale बनाऊँ, so what if we use it with the head of the department? जितने 1 है उसको 2 पे जाना है, जितने 2 है उसको 3 पे जाना है. Okay. Assessment, is the assessment reliable and valid? Is there any positive, negative washback effect? Is there any post-exam analysis policy? ये 3 सवाल एग्जाम डिपार्टमेंट को भेज दीजिए 1 to 5 के साथ. You will get to know the actual picture of exam department as well. Then management, is the management part of academic planning and progression? Are the policies and procedures support learning? And is there any accountability mechanism? Accountability. Finally, classroom climate. What sort of climate for learning does the instructor create? Classroom learning environment. What are the student views of their learning? ये वो आ गया student feedback. Student views of learning. The summary is quite simple. Look at the best practices. There must be PLOs and their relevance with the program. They must be aligned with the learning outcomes. There must be regular course evaluation and continuous improvement focused. I will not use the word CQI. I'll say continuous improvement. Look at the way with this. If department chair अगर present कर रहा है BOS के अंदर, progression every year. And then faculty development and student involvement in the process. Finally, effective and well-planned assessment, effective feedback, and inclusive learning. If these are the few areas of best practices in your institution, you will see some difference. Please remember, before I close, do not expect change over a period of a year or two. अगर आप अपने career के अंदर 50% या 20-30% भी कुछ change लाए, you will do your job. Leave it for the others to come. We need to wait till our regulatory bodies are organized and systematic. For instance, NBEC is quite organized. PEC is doing a great job, but the regulator who is HEC, ask yourself what is HEC, and you will find the name of different departments with variable policies. So till the regulator says QA department can create their own business by adopting some of the best practices. That is all from my side. If there's anything, please feel free to raise any question or concern. It's always a pleasure listening to you, like, for each other for a very long time. It's good to sit with so many, like young QA professionals.
So it's good, they are learning very fast. Because you are monitoring the program, the quality of the take it as a challenge, take it as a passion. It's very important. ये नहीं कि ये अच्छी सी रिक्वायरमेंट है एक पुलिस डिपार्टमेंट बन गया है और पता नहीं मुझे इसको डाल दिया यहाँ पर you are there, you should go with a full passion. ठीक है ना बाहर नहीं करना डिफरेंट ट्राई किया है तो हमारी से बात अच्छी होती है जिसका प्रोफेसर है जो भी है now like this kind of thing तो ये बहुत अच्छी बात है you can make a change ये आपने भी खास बात है QEC will bring a change ठीक है ना हम बहुत लकी है हम सुपर की बात आती है कि जवाहर इज नाउ लीडिंग द QEC वो सारी पोजीशन पर रह चुके हैं अब मैं 3 होना तो वो पता है कि नेटवर्क आ गया है तो मुझे बताते हैं कि अच्छा ये ठीक करना है क्या बात है so QEC you have to get there thing you have done doesn't matter age doesn't matter talking is very important you know like procedure things हम मेडिकल डॉक्टर को देखो बड़े अच्छे होते हैं इन चीजों में तो हमारी इंसान की एज क्या but you know they are very good in expressing themselves discussion करते हैं even they are going to get professional they कहते हैं ये आप ये रिक्वायरमेंट है तो लर्न करें important नहीं है just put time हमने वो भी बहुत अच्छी तरह लर्न किया fortunately Suffa University is one of the leader in outcome-based education and we feel pride in that हमारे सारे programs को भी accredited है and we have developed our software level stuff we know this part but of course because my exposure and effort मैंने यहाँ कोशिश की contribute करने की कि we are not you know like presenting our SAR to please we are presenting our SAR to say that we have our own some good practices मेरी basically ये नहीं बाकी एक बहुत जरूरी है कि आप फोकस हो जाएंगे भाई 30 साल की उम्र में अगर आप ये प्रोफेशनल बन गए तो nothing better than that ठीक है सर तनख्वाह भी ज्यादा हो जाए ठीक है विल बी डायरेक्टर वेरी सून गाड़ी वाड़ी मिल जाती है एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से देखिए सर थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सेकेंडली मी one request if you do not want to continue in QA please leave this job if you are forced to take this role don't come to session ठीक है आप एक सेशन अटेंड करेंगे नंबर मिल जाएंगे आपको लेकिन होता क्या है आई हैव सीन अ यूनिवर्सिटी जहां पर एक QA प्रोफेसर आए थे ही वाज वेरी एक्टिव आप लोगों को जो QA फ्रेटर्निटी के जानते हैं बहुत एक्टिव थे साल 1.5 साल एक्टिव रहे अचानक से लीडरशिप में फैकल्टी बन गए अभी नो मोर एंड अ न्यू पर्सन केम और वो आए थे इस दफा जो वर्कशॉप हुई थी हमारे पीसी के अंदर उसमें आए अब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो अगेन कोई कल्चर बनेगी मतलब आपको यू हैव टू गो फॉर सम अदर ऑप्शन डू नॉट वेस्ट योर टाइम वी नीड पीपल लाइक Abdul, Wahid and all of you those who consistent जैसे सर ने भी कहा ना कि 30 years में 25 में आप इससे आ गए you will learn a lot in future and you will do wonderful job because what we are doing at this stage you have gone through you will be far ahead of so that is something which I believe should be addressed एक और पॉइंट है मतलब लाइक QA और एकेडमिक्स में ये साथ साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने शायद पहली बार इतने सारे सोल्यूशन के लोगों के साथ बैठा हूं ना हम अलग-अलग बैठते हैं एकेडमिक्स की मीटिंग अलग होती है आप लोग अलग शामिल होते हैं आई थिंक इसकी सेट टू दैट ओपनली डिफिकल्ट थिंग्स जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना जिसमें इंटरेक्शन मुश्किल हो रहा है वी हैव टू टॉक ऑन दैट एकेडमिक्स के लोग बैठे हैं क्विज लोग बैठे हैं तो मसला क्या है हाउ टू सॉल्व इट पहले ये एक साथ-साथ हमें बैठना चाहिए एंड वी शुड टॉक ऑन डिफिकल्ट थिंग्स any other question if there is any that are more common previous work जो सब हम लोग कर रहे थे सारा related to supervision अभी आपने पार्टी के दूसरी बॉडीज जो है इंटरनेशनल बॉडीज जो है नाम नहीं लेते पाकिस्तान में बनी है there was a talk 2 years back जब हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अपने भी यहाँ एक वो बनाए तो कुछ है कुछ में क्योंकि एक साथ आपको मैं थोड़ा सा पूछना चाहती थी कि बात करते हैं टेक्निकली काम किया इसके ऊपर नहीं एक मीटिंग बॉडी बनाई है पिनकारी के नाम से जो QA प्रोफेशनल्स की है अगर वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर देगी तो उसके शायद थोड़े से पैसे हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यू विल सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर I don't know the status. टू मी आई विल 55 और 2 मार्क्स
I'll save money from my university. The guide will अच्छा even भी किया था This is a good idea. Any other comment or question? If there is no question, I really appreciate the participants for inviting me for this session, and I'm really happy to be with you this afternoon. Thank you very much. I would like to. Thank you. Thank you, Doctor. I would like to thank everyone to being participative and involved. I'm sure there are many questions that are going to sort of come in our minds in a few minutes, and we do have time to socialize a bit. We've arranged lunch for everyone before we go for prayer. And then we disperse. I would like to call upon our Vice Chancellor, Dr. Abdul Wahid. He's been avidly, he's very interested, as I said at the onset, he's behind this in terms of benchmarking setups that we are looking at. So, can I come there? Sir. Thank you, Dr. Joshi. Yes, I'm thankful to my QEC team who organized this seminar today. Hope it was benefit to you all. And I also thank quality, of course, is the talk of the town. HEC is whenever there's a meeting, HEC always stress that now it's now quality needs to be addressed in the university rather than access. Access is their problem, but quality is now becoming a more major concern for all of us. Especially if you want to have some standing in the ranking, quality obviously comes in. So I'm thankful to the two speakers, illustrated speakers, Mr. Hoster and Mr. Usmani. He was with us before as well. It was kind of going to come again, and I think I'm interested to. It's not to be one of the seminars. It should be a series of seminars. And I would also look forward that the other universities, the participants of the other university, they also organize such things. And I assure you, our participation will be there. With these words, I thank you all again for taking your time out and to attend the seminar today. Hope it will benefit you all. Thank you, sir. Thank you. So I would request Usmani sir to take the token of appreciation from Sir VC sir. Wahid will follow that. Thank you, sir. सर ये आप भी यूज करते हैं सब अगर आप साफ कॉर्पोरेट पार्टनर्स के लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तो आई विल टेक नेम नंबर 1 मिस्टर परवेज अहमद लाइक ऑफ करते मिस हफ्सा आलिया Mr. Sheikh Masood. Mr. Mohammad Adnan Fuzel. Mr. Faraz Ahmed Sheikh. Mr. Khabar Khalid.
Mr. Iftkhar Ahmed. Mr. Tawsif Akhlaq. Mr. Sayyid Waqarul Hasan. Mr. Saad Hamid Usmani. Mr. Hamza Pasha. Ms. Javeria Sabir. Ms. Arshia Samin Naqvi. Ms. Anam Sami. Mr. Adil Shahab Bhatt. Ms. Ashtika Tabassum. Ms. Amreen Asif Qureshi. Dr. Rima Faruqi. Ms. Suraya Khatun. Ms. Arisha Maham. Now we are proceeding to the lunch beside the conference room. So lunch के बाद जो है वो नमाज सवा 2 बजे बातमात अदा करेंगे. So kindly support करें गेस्ट को conference में.